Hi guys, Karan this side from shopperwise.com. So today we're gonna talk about our debt mutual fund safe. अब इक्विटी मार्केट्स इतनी गिर चुके हैं, निफ्टी has almost fallen by 25-24%. Sensex has also fallen 24-25%. So the one big question whether जो सभी के दिमाग में आता है कि अपना पैसा कहाँ सेफ है and where to get the most interest rates, be it fixed deposits, be it post office savings schemes. आपको याद ही होगा कि हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स. अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ डू वॉच इट. Whether to invest your money in the gold mutual funds, gold ETFs or sovereign gold funds, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, बट डू वॉच इट. पॉज करके जा सकते हैं इसको देखने के लिए ज़रूर. सो बिफोर प्रोसीड फर्दर, डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे. Do like this video, do subscribe my channel, and do press on the bell icon to keep on getting the most educational videos straight away in your inbox. So let's talk about the debt mutual funds today. So debt mutual funds invest in fixed income securities like bonds and treasury bills. So gilt funds, monthly income plans, short-term plans, liquid funds, and fixed maturity plans. So ये सब actually में these are actually various types of debt mutual funds, right? So debt mutual funds actually invest in the government, the fixed income securities, just like bonds and treasury bills. To talk about whether they are actually like as compared to debt mutual funds versus the bank FDs, as you might be aware, the bank FDs has almost reached to a level where one is actually getting around 5% to 6% depending on the tenure of the FDs and all, but they are actually offering very less rate of interest as compared to the debt mutual funds. And do you really think that you will actually beat the biggest factor, that is inflation, which is actually like the most important factor to be considered while investing your money? So I don't think so. So bank the fixed deposit carry what you call the reinvestment rate. For example, अगर आपने आज FD करा दी for example 10% की या 8% की, और कल जैसे आज का सिनेरियो है, अब पूरा कोविड-19 का सिनेरियो है, उसमें इंटरेस्ट रेट इतने गिर चुके हैं कि एन इन्वेस्टर हार्डली गेट्स 5 to 6% रिटर्न. सो उसमें री इन्वेस्टमेंट अगर आप कराओगे तो आपको नाम मात्र रिटर्न्स मिलेंगे, राइट? Whereas if you invest in debt mutual funds, you can easily get the 8 to 9% with the indexation benefit. आगे हम बात करेंगे कि टैक्सेस कैसे हो सकते हैं FDs और डेट म्यूचुअल फंड्स के भी. सो मैंने एक ये चार्ट बनाया है, उसमें अगर आप देखें सो द रियल रेट ऑफ रिटर्न is only 1.7%, right? That you actually get in FDs. And the consumer and I've actually put the consumer inflation, which actually comes around 5%, and the 1 year FD rates, let's keep it at 6.7% to be safe. आजकल तो आपको पता ही है 6% तो ज़्यादा भी नहीं है, बट फिर भी 6.7% है, बट आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न is only 1.7%, keeping the consumer inflation at 5%. But trust me, the consumer inflation is actually rising and it's actually 7%. So आपको negative real rate of return मिलेगा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्सेबल इनकम, राइट? सो बट डेट म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली में जो टैक्सेशन होता है वो होता है 20% पे, बट दीज आर बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, you actually get the indexation benefit also. So as I said, the debt mutual funds and the fixed maturity plans are also more tax efficient than fixed deposits if held for more than 3 years. So there is a long term capital gains which is levied on the debt mutual funds, that's 20%. But if you actually include the indexation benefit also, the returns are actually much higher as compared to the fixed deposits. अब सब कहते हैं कि जो फ्रैंकलिन फियास्को हुआ है जिसमें वो उन्होंने 6 डेट म्यूचुअल फंड्स बंद ही कर दिए हैं. सो अब डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं? बट सी सब जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज जैसे लाइक HDFC and SBI, सो दे हैव बिगर AUMs which can actually support you. और ऐसा नहीं है कि अगर फ्रैंकलिन ने बंद कर दिया है डेट म्यूचुअल फंड्स तो सारे डेट म्यूचुअल फंड्स बेकार हो जाएंगे. लेट्स सी. So
As I said, frankly, open-ended fund has actually winded its six debt mutual funds, which is Franklin India Ultra Short Bond Fund, Franklin India Low Duration Bond Fund, Franklin India Short-Term Income Plan, Franklin India Income Opportunities Fund, Franklin India Credit Risk Fund, and Franklin India Dynamic Accrual Funds. तो ये सब उन्होंने फंड्स बंद कर दिए हैं बिकॉज इसमें काफ़ी रिडेम्पशन आ गया था, और उन्होंने अभी मीडिया के द्वारा अब सभी इन्वेस्टर्स को सूचित किया है कि वो धीरे धीरे आपका पैसा रिडीम कर देंगे. बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू शुड एक्चुअली स्टॉप इन्वेस्टिंग इन अ डेट म्यूचुअल फंड, राइट. सो अब आपने देखा ही होगा कि जैसे मैंने वेबसाइट पे भी अपने chopperwise.com पे भी लिखा है कि दी डेट म्यूचुअल फंड्स का कंबाइंड एसेट 26,000 करोड़ आ गया था. अब इन्होंने एक्चुअली में दी ओनली प्रॉब्लम दैट आई एक्चुअली फिगर्ड आउट फ्रॉम द फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड, दे हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड द डेट फंड्स इन सम रिस्की एसेट्स जस्ट लाइक वोडाफोन आइडिया, जस्ट लाइक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरे बैंक्रप्सी के मोड पे आ चुके थे एंड दे एक्चुअली वांट टू वाइंड अप देयर ओन बिजनेस. अब उन्होंने उनके कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट किया था, बट they are not getting the payment from these Vodafone Idea or Reliance Infrastructure and all. And in the end, they actually have to write off the money, which actually in turn have to close the debt mutual fund scheme because they were actually not getting payments from these companies. So आगे वो investor को क्या return देंगे? So to meet the increased redemption by investors, the founder has to borrow from the banks, and which could not be reached. It's actually maximum limit. The only thing is they have actually invested in some riskier assets, which so उसमें से उनको payment नहीं आ रही थी, just like Yes Bank and all. So वो आगे investors को उन्होंने return नहीं दिया, and the return have actually fallen from for example, I was seeing the Franklin India Low Duration Fund and the Franklin Short-Term Income Plan in 2019-18, they were actually doing well and rolling out returns just like 9%, right? And अभी उनका return देखेंगे तो hardly 5% है, hardly. अब तो उन्होंने बंद ही कर दिए, but as compared to that, they were actually very low. So coming to that, so मैंने कुछ एनालिसिस की है और बड़े बड़े डेट म्यूचुअल फंड्स विच आर एक्चुअली गिविंग बेटर रिटर्न. सो यू शुड एक्चुअली लुक लाइक go to my website shopperwise.com and look for this article in order to review and invest in debt mutual funds. So मैंने एनालाइज किया है कि किस डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फियास्को के बाद तो हर एक इन्वेस्टर अब तो यही सोच रहा है कि यार मैं तो डेट म्यूचुअल फंड से सारा पैसा निकालूँ, या डाइवर्सिफाई जो मैंने किया हुआ है, मैंने 8-10 फंड्स में डाले हुए हैं, तो सारा पैसा निकालूँ, बिकॉज इट हैज़ क्रिएटेड सो मच ऑफ पैनिक इन इन्वेस्टर्स माइंड दैट वेदर द मनी इज एक्चुअली सेफ इन द डेट म्यूचुअल फंड्स और नॉट, और वेदर टू इन्वेस्ट इन सम फिक्स डिपॉजिट्स. सो फिक्स डिपॉजिट अगर येस बैंक की भी बात करें कि जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट कराई हुई थी येस बैंक में, जो एक टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा बचाया गया है, बट आपका फिक्स डिपॉजिट वहाँ भी सेफ था. मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, जस्ट राइट इन दैट कमेंट बॉक्स कि वेदर if you actually have invested in Yes Bank in those times, whether when Yes Bank was actually going through very turbulent times, so आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि whether my fixed deposit is actually safe in Yes Bank or not, right? और काफ़ी उन्होंने redemptions भी करी हैं, काफ़ी डिपॉजिट्स क्लोज भी करे हैं. 5 लाख तक तो सिक्योर है बाय गवर्नमेंट, बट व्हाट आफ्टर 5 lakhs, राइट? और 5 lakhs भी आपको पूरा नहीं मिलता. इट्स जस्ट लाइक इट्स एक्चुअली accumulation of your interest on savings and your FDs and whatever money you have in your bank account, right? So मैं ही तो यही कहता हूँ कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पहले अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए. Just select the big AMs, just like HDFC and SBI and all, right? And concentrate your debt funds into 5 to 6 biggest funds. Biggest funds का मतलब है जिनका AU है, assets under management सबसे ज़्यादा है, right? और अगर आप देखेंगे 70% ऑफ दी डेट स्कीम्स हैव एक्चुअली डन मच बेटर दैन एज कम्पेयर टू द लार्जेस्ट फंड्स. For example, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, the 5 biggest gilt funds have delivered 16.40% 1 year average return. 16.40, इक्विटी से भी ज़्यादा. वाओ. With the most important fund, SBI Magnum Gilt, delivering a 18.21%, which is actually great in terms of the returns, right? और अगर आप इस पर टैक्सेशन भी लगाएंगे तो अगर 30% टैक्स भी लगाएंगे,
real rate of returns comes around 13 to 14% easily with the indexation benefits too. Talking about the bond fund category, the biggest funds have delivered to 10.40 percentage average return in 1 year. 10% का return बहुत security ने भी नहीं दिया है. With the most important scheme, which is Aditya Birla short term fund scheme bond, have given 10.67% return. In the short duration debt mutual fund category, the most important fund have given the 10.13% average return in 1 year period. एक साल में ही उन्होंने 10.13%, और ये जो सबसे अच्छी स्कीम इसमें निकल के आई है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड में, वो है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, विच हैज जनरेटेड अराउंड 9.91% विद इन द सेम पीरियड. सो ऐसे में मैंने कहा कि जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट स्प्लिट योर मनी इनटू 5 to 6 बिगेस्ट AUMs, जस्ट लाइक HDFC, SBI, ICICI, Axis and all, so that these what do you call asset mutual fund companies are actually safe and will not actually go and turn into a fiasco just like Franklin. So coming to the article, in the bank and the PSU category, so Axis Bank and the PSU category have delivered 10.58% return, right, in just one single year. And if you talk about other debt mutual fund schemes in banking and PSU category, they have delivered a return of 11.07% in 1 year only. Coming to the credit risk category, the important fund which has given the most important better returns is actually HDFC Credit Risk Fund, right? So which has equally given around 7% return as compared to other equity mutual funds which are running into negative things. So in the medium term duration debt mutual funds, the most important schemes have given 8.77% returns. Why with the most important ICICI Prudential Medium Term Fund have already given 9% within the same period. So ICICI Prudential Medium Term Fund ने 9% का return दिए last year. So, or a similar picture can be drawn, which is from the dynamic bond category, which is also a part of the debt mutual fund only, has given 8.77% return. Medium to long term category has given 14.74% return. Long duration category has given around 12.53% return. So these debt funds, mutual funds have given, or what do you call these big AUMs have given good solid returns, which means the investors can have a good investing experience when as compared to the other passive schemes, just like post office savings schemes, just like fixed deposits. See, boss, मेरा मानना ये है कि दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि फ्रॉम अ सिंगल penny you should actually get the real value out of it, should actually beat inflation, which is actually like cutting down all your monies over the longer period of time. So you should actually invest money in equities which are actually falling. For example, मैं ये बात करूँगा equities की जो already निफ्टी 25% गिर चुका है और सेंसेक्स भी 25% गिर चुका है. तो अगर आज कोई कहीं मॉल खुले होते, वहाँ पे 25% की सेल लगी होती है, डिस्काउंट चली जाती, लगा होता वहाँ पे 25% डिस्काउंट लगा होता, तो आप पक्का दौड़े वहाँ जाते, be it Zara, be it H&M and all, and you should have easily shop for 10,000, 20,000. So why to actually waste money on the clothes, and why don't you invest the money in the equities when they are actually selling at 25% low as compared to its mark 12,430, right? So you can actually get better returns in the long term. Coming to the debt mutual funds also, you should actually invest in debt mutual funds for a longer duration of time. Just split your investments into liquid funds, short-term funds, long-term duration funds also, and then dynamic bond category also. So you can split your, for example, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में से 5 कैटेगरीज को आप चुन लीजिए और 5 फंड्स को चुन लीजिए जो मैंने बिग एम्स बताए, ICICI, Axis, HDFC, and one more was there. So you can actually split your 1 lakh money into various debt mutual fund schemes, right, depending upon 1 year, 2 year, 3 year, 4 year and 5 year horizon.
सो मैं आशा करता हूँ आपको डेट म्यूचुअल फंड्स को समझ में आ गया होगा, और ये सब स्कीम्स एंड बिग इवेंट्स किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं करी हैं अभी यूट्यूब पे. प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड click on the bell icon just to get regular updates. Thank you so much for that.